Hello everyone, good afternoon everybody. I am Priyanjali from beautiful Spotless Skin team. I'm sure all of you must be keeping good health. To look beautiful and smart all the time is a quest of humans, right from the beginning of civilization. Few of the common conditions affecting the look and feel of a person is acne, hyper or hypopigmentation, and even hair loss. Out of these, acne is a big concern. Acne is a common skin condition that can impact anyone, whether you are a teenager or an adult. This skin complaint is no stranger. Knowing the various types of acne can help you treat the condition better. Acne vulgaris is a chronic condition affecting more than 85% of adolescents and young adults. It is one of the most uncommon diseases affecting humanity and quality of life. It goes beyond just being a skin ailment to various psychological disorders such as depression, anxiety, stress, and low self-confidence. Hence, it is important to know about the holistic treatment approach of this ailment. Despite its prevalence, few people know that June is Acne Awareness Month. Acne Awareness Month was launched to combat the negative stigma surrounding this common skin condition and also to be aware of treatment approach for acne management. So let's connect today with our skin expert, Dr. Sarita Gupta, live from Ambala to talk on acne management. Dr. Sarita Gupta is a dermatologist, cosmetologist, and STD specialist. She joined her MBBS at Government Medical College, Faridkot in 2007 and did her specialization in skin from Dr. RPGMC Tanda Government Medical College in 2014. She's a member of IADVL, which stands for Indian Association of Dermatologists, Venereologists, and Leprologists, and specialized in treating skin diseases and has a vast experience in anti-aging cosmetic procedures. She has attended many state and national conferences in her lifetime, carried to keep her updated and learn new cosmetic techniques. Welcome, Dr. Sarita. It is our honor to host you today. Ma'am, to start with, our first question for you, doctor, would be, first, please start with what is acne and what are the types of acne lesion? Ma'am, basically what are acne? Acne are inflammatory lesions. Inflammatory means pus containing lesions on the face. It is basically common in the adolescent age, like 13 to 28 years of the age. And there are many types of acne. Like first, why these acnes are there? It is due to the hormonal changes. Because of hormonal changes, there is an increase in the oil production. Due to increase in oil production, the first stage of acne is comedones. What are comedones? Commonly, we know comedones as a black and white heads. Doctor Saab, hame black or white heads. Basically, black and white heads are the sebum or oil collection. Whenever patient has an increased oil production, these increased oil production come on the skin as a black and white head. But जब भी patient को ये black और white heads की production ज़्यादा होती है, then there is a bacteria called as a P. acne. That bacteria attack on this oil and convert this non-inflammatory acne into the inflammatory one. Means black or white heads में आपको कोई pain नहीं होगा. These are just black or white heads without painless दाना. But जब P. acne bacteria पे attack करेगा, then these non-inflammatory lesions are converted into inflammatory. Means they will then become red, pus, painful. After that, bacteria will continue to produce new pus and their size will increase and they are converted into nodulocystic acne. So these are the stages of acne. First, there are the black or white head. First, there are small pus-filled lesions. After that, even that patient is not treating the acne, then this small pus-filled lesion will convert into the nodulocystic acne. After that, that nodulocystic acne will leave a bad mark or scars. So these are the basically staging and the types of acne. Ma'am, बहुत ही बेहतरीन से आपने समझाया है हमें. And
आई एम श्योर ये आज का लाइव सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं रिगार्डिंग एक्ने। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा, डज स्पेसिफिक एरिया ऑफ फेस एक्ने मींस स्पेसिफिक कॉजेस? Yes, ma'am. If patient has a more acne on the forehead, it may be due to the dandruff, means seborrheic dermatitis, seborrheic capitis. If patient has a dandruff, then the more acne are mainly on the forehead. And if patient is used to apply oil on the scalp every day, then also he or she have more acne on the forehead. After that, like T-zone area, some patient has a more oil production on the T-zone, so T-zone has a more acne. Secondly, like abdominal problems, if patient has like constipation, diarrhea, these problems, then he will have a more acne over this area. And if patient is used to like this every time, then also patient has a more acne over this chin area. So some specific, but this is mostly after 28 years of age. राइट तो मैम आपने कहा कि ऑयलिंग भी एक कारण हो सकता है एक्ने होने का। यस यस यस, इसीलिए हम पेशेंट को एक सजेशन देते हैं ड्यूरिंग एक्ने ट्रीटमेंट, ट्राई टू अवॉइड leave this area. You can apply oil behind, but don't apply over this area. Okay, I think we are having a slight technical glitch. For all the people जो आप सुन नहीं पा रहे हैं हमारे डॉक्टर को फिलहाल, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी। इन्होंने कहा है कि जो फोरहेड का जो सेंटर पोर्शन है वहां पे हम ऑयल अप्लाई करने के लिए अवॉइड करते हैं, पीछे के एरिया में आप कर सकते हैं। Avoid only this area, this area. Okay, okay. Only 4 fingers, front 4 fingers. Avoid this area only. You can apply anywhere there. Avoid this first 4 fingers. ओके वेल, हमने शुरुआत किया है आज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट एंड विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर, our next question for you is, what are the grades of acne? There are grading. There are 4 grades. In the first grade, we have only black and white heads called as comedones. I have already explained. These are simple, painless daने. Second is the pus filled lesions, वो पेन वाले छोटे छोटे से दाने. Third one is the nodulocystic acne, मोटे मोटे जब हमारी गांठें बन जाती हैं. Fourth one is the scars. So these 4 stages of acne are there. Okay. Well, now that we know what is acne and how can we get it and what are the grades of acne, we'll quickly move on to our next question, which is, what are the treatment options for different grades of acne? Ma'am, as a first stage of acne, we have only comedones. Like comedones being black and white heads. So black and white heads is only because of increased oil production. So in the first stage, we prescribe only and only the medicine which decreases the oil production, called as isotretinoin. So in the first stage of acne, we generally prescribe isotretinoin. Now in second stage of the acne, there is an infection, like it's a pus filled, so we also give the antibiotic. ठीक है, तो in the third stage of acne, where there are more nodulocystic, so with isotretinoin or antibiotic, we have to sometimes add short course of steroid to decrease the inflammation. In the fourth stage, we have only bad marks and scars, for which we do the procedures. Well, very brilliantly explained by our doctor whom we have live today. She told us what are the options, क्या क्या options हमें मिल सकते हैं different grade of acne के लिए. अभी हम चले जाएंगे हमारे अगले सवाल की ओर. Doctor, our next question for you is, what are the procedures available for acne treatment? क्या क्या procedures हो सकते हैं acne treatment के? Ma'am, for active acne, for comedones, we can do the extraction, and for active acne, we can do the peeling or lasers. For the peeling, we have 2 peels, salicylic acid and the black peels, or otherwise we can do the carbon laser peel. These are for active acne. In case of the scars and pigmentation, for pigmentation also we have chemical peels, and for acne scars we have different procedures, because we can't treat acne scars with medicines. For scars, we have to do the procedures
which lead to increased collagen production. For increased collagen production, we have different procedures. One is a simple microneedling. Second is a vampire facial. Other is the MNRF, microneedling radio frequency. Fourth one is a CO2 laser or monothreads. These all are the procedures which are available for treating the acne scars, means acne khadde. Right. With this procedure, we can treat the acne scars. Well, हमने जाना कि प्रोसीडियर्स क्या है एक्ने ट्रीटमेंट के, डिफरेंट रेट के एक्ने ट्रीटमेंट के. मैं हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी जो इस समय हमें देख रहे हैं, आई थिंक आपको ये लाइव रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अभी इस वक्त, क्योंकि द इंफॉर्मेशंस व्हिच वी आर रिसीविंग टुडे एट दिस लाइव इज गोल्ड, प्योर गोल्ड. तो चलिए इसी के साथ हम हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू डॉक्टर इज, व्हाट डू वी डू फॉर एक्ने इन सेंसिटिव स्किन? हमने काफी लोगों को देखा है कि कहते हैं कि स्किन सेंसिटिव है, अचानक से कुछ भी अप्लाई करो रिएक्ट कर जाता है, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट हम सजेस्ट कर सकते हैं? मैम, दैट वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन. आफ्टर द एग्जामिनेशन वी प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंगली. लाइक फॉर माइल्ड स्किन वी जनरली यूज क्लिंजर्स, नॉट फॉर्मिंग फेस वॉश. ठीक है ना, आफ्टर क्लिंजर they have to use a moisturizer. Now for oily skin there are different moisturizer. Right. This is not like कि यार मेरी स्किन तो ऑयली है, मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है. Even oily skin need a moisturizer, but they have a different moisturizer than the dry skin. So they have to use cleansing lotion, moisturizer and sunscreen, and these all things are different for oily skin and different for dry skin. So right. they are not like कि यार तू भी ये यूज कर रहा है तो मैं भी ये यूज कर लेता हूँ. ठीक है ना, तो for sensitive skin they have to use their own products. राइट. डॉक्टर आपने कहा कि हर प्रकार की स्किन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही पे आ जाता है कि पहचाने कैसे अपने स्किन के अकॉर्डिंग. कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि ऑयली, जी उसी के लिए तो डॉक्टर है मैम. जी राइट. वहीं पे हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन कि whether it's oily or dry, we will prescribe accordingly. Like for oily skin, we have to use non-comedogenic moisturizer. Sunscreen should be gel form, not cream or lotion form. Right. If you have a sensitive skin, you should use non-lather face wash. I mean face wash which are not forming lather. And if you have an oily skin, you should use a face wash containing salicylic acid. So depending upon all these things, after examination, we prescribe accordingly. Perfect. Well, to all our viewers, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए किसी के स्किन पे अगर सूट कर रहा है तो अक्सर लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है. लड़कों के साथ तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि चले गए दोस्त के घर पे, देखा कि प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, कुछ भी मिला तो लगा लिया. लड़के अक्सर ऐसे ही करते हैं. लड़कियां हम देख के बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं किसी और को कि अरे इतना अच्छा स्किन है तुम्हारा, क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हो, तो तुम यूज कर रही हो तो मैं भी यूज करूंगी. अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है. पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी स्किन को पहचानते हैं, जानते हैं, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, देन देयर इज अ सीरियस इशू. आपको जाना चाहिए आपके नजदीक की डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली अगर आप सफर कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग. यही आज हम हमारी लाइफ के द्वारा कहना चाहते हैं. हम चले जाएंगे हमारे अगले सवाल की ओर. डॉक्टर, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज मेंटेनेंस थेरेपी इन एक्ने क्या हो सकता है? Ma'am, after completing the treatment of acne, after complete course of the acne, like patient will use a face wash containing the salicylic acid. Will use a sunscreen only in gel form, not in the lotion and the cream form. He and she will avoid oily, sugar and dairy products because these all things will increase the acne. And if the patient has if he has an increased weight, then maintain the weight because increased weight will lead to hormonal changes and that hormonal changes further lead to acne. So weight maintenance. So all these precautions patient has to take. वेल, हमने मेंटेनेंस ऑफ एक्ने के बारे में जाना और हमारे व्यूअर्स जितने भी आज हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर एक्ने रिलेटेड इश्यूज से आप सफर कर रहे हैं देन हमारा चैट बॉक्स ओपन है. प्लीज मेक श्योर आप अपना इंक्वायरी जरूर हमें ड्रॉप करें. विद दैट विल क्विकली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा अगला सवाल डॉक्टर आपके लिए है कि डाइट जो है
ऐसा हमें लगता है कि एक्ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके पीछे कोई साइंस है, और अगर है तो डाइट एक्ने को कैसे खराब कर सकता है, या अच्छे डाइट की वजह से कैसे हमारा एक्ने सुधार की तरफ बढ़ सकता है? देखो मैम, हेल्दी स्किन नीड अ हेल्दी डाइट, राइट। ठीक है ना। फॉर एक्ने में आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, ऑलरेडी सजेस्टेड यू that you need a food that contain less soil, less sugar, and less dairy products, because in dairy products it contain a hormones, testosterone, that will increase the acne. It's not like कि milk में fat है इसी acne हो रहा है, because milk contain hormones like testosterone that will increase the acne. So diet played a important role in acne production. ये आज हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण जाना है कि काफी लोगों को बचपन से, मैम हमने ऐसा भी देखा है कि बचपन से दूध पीने का आदत है लोगों को रात को सोते वक्त। नहीं, आई एम नॉट लाइक कि दूध बंद कर दीजिए. You have to minimize your dairy products. We have a lot of dairy products in our daily life. Like it's a milk, curd. In summers, we are taking lassi, chocolates, ice creams. If you are taking milk, you have to avoid other things like chocolates, ice creams. Right. This is the thing. Like यहाँ patient आता है तो पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब दूध बंद कर दें. फिर मैं लाइक दूध मत बंद करिए, आप अदर थिंग्स, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स आप बंद कर दीजिए, लाइक चॉकलेट, स्वीट्स, आइसक्रीम्स, अब वो बंद कर दीजिए, बट यू कैन टेक मिल्क एट वंस, ना. राइट. वेल, नाउ दैट आवर जो ब्लडी सा एयर था वो जब क्लियर हो गया है अभी कि दूध से सपोज डायरेक्ट दूध के सोर्स से कोई इशू नहीं है, पर कोई भी शुगर इनटेक हमारे शरीर के लिए वैसे ही खराब होता है. वी शुड फॉरमोस्ट ट्राई टू अवॉइड द शुगर इनटेक जितना हो सके. रिफाइंड शुगर जो है उसे हम जितना ज्यादा अवॉइड करें उतना हमारे लिए अच्छा है. एज डॉक्टर सेड कि हेल्दी डाइट जैसा हम खाएंगे वैसा हम दिखेंगे, तो अपने डाइट पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन केस ऑफ एक्ने. डॉक्टर, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा हटके हमारे स्क्रिप्ट से, या जितना भी सवाल हमने सोचा है कि आज हम सारे एरिया टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबका जितना भी क्वेश्चन है हम उनको आंसर कर पाए. जो भी हमारे आपने क्योंकि कहा कि डेयरी प्रोडक्ट के बारे में, जितने लोग अभी फिलहाल एक्ने से सफर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, और जो सफर नहीं कर रहे हैं या हो सकता है यू नेवर नो किस एज में आके आप सफर करें एक्ने से, उनके लिए आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो फिलहाल सफर कर रहे हैं फ्रॉम एक्ने? Consumption should be at the lower side. Dairy products consumption should be on the lower side. Right, right. So I am not saying कि totally stop dairy products, but it should be on the lower side. Right. Well, with that we'll quickly move on to our next question. एक बहुत ही important question जो है, जितना दिन आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ रहा है. इनफैक्ट सन का जो रे है वो हमारे तक आते आते बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जा रहा है हमारी स्किन के लिए. पहले हम सुनते थे कि धूप में बैठो, इट्स गुड फॉर योर स्किन, इट्स गुड फॉर योर हेयर, पर आजकल हम सुनते हैं कि धूप में जाओ, जरूरी है, विटामिन डी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पर अपने स्किन को प्रोटेक्ट करो. तो डॉक्टर, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में? मैम बहुत जरूरी है. You have to moisturize your skin even if you have a oily skin. And from the protection from UV radiation, you have to apply sunscreen even when you are inside. You have to apply sunscreen after every 3 hours, like at 9 o'clock, 12 o'clock, then at 3 o'clock. Even you are inside the home. And whenever you will go outside, you have to cover your face because sunscreen provides only 40% protection. The rest of the 60% protection you have to take by covering your face. Right. डॉक्टर, हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, या हमारे घर पे जितने भी जितने भी हमारे इंडियन विमेन है घर पे बहुत बिजी रहते हैं. दे आर ऑलवेज बिजी व्हेन दे आर एट होम. इनफैक्ट आई हैव सीन माय मदर आल्सो ऑलवेज बिजी. देन शी नेवर टेक्स केयर ऑफ हर स्किन. सबको ये लगता है कि घर पे अगर है तो सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है. It's a myth. Yes. It's a myth. Right.
तो हमारे व्यूअर्स जितने भी आज हमें देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि घर पे है, धूप कहाँ लगती है, पूरा दिन घर के अंदर रहते हैं, तो शायद मैम पर रेडिएशन आती है अंदर, धूप नहीं आती, बिकॉज सन कंटेन यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट। डॉक्टर, हमारे बीच काफी सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट जब से लॉकडाउन पड़ा है तब से हम ऑफिस तो नहीं जा रहे हैं पर घर से जरूर काम कर रहे हैं। फिलहाल भी हम घर से ही कर रहे हैं अभी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। तो लैपटॉप के सामने बैठना, लाइट के सामने कंटिन्यूअसली बैठना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सनस्क्रीन हम उस क्षेत्र में भी यूज करें? Yes, you have to apply. That blue light also affect your skin. Right. Well, आज हम जान रहे हैं अपने स्किन को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं और क्या क्या खान पीन में हम चेंज कर सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में क्या हम चेंजेस ला सकते हैं ताकि हमारा स्किन अच्छा, खूबसूरत और स्वस्थ रहे। एंड विद दैट विल क्विकली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर, ये भी एक, आई नो जितने भी व्यूअर्स हमारे बीच हैं आज, इस समस्या से भी वो लोग बहुत ज्यादा भोग रहे हैं फिलहाल। लोग जानना चाहते हैं कि सनस्क्रीन तो चलो यूज कर लेंगे, पर सनस्क्रीन किस प्रकार का हो, मिनिमम कितना SPF हमें यूज करना चाहिए सनस्क्रीन में हमारे डे टू डे लाइफ के यूज के लिए? 30 is enough for Indian skins. Right. 30. But more than SPF, it's a PA factor also, which is important in sunscreen. Right. And the other thing which is important for sunscreen, depending upon whether you have a oily or dry skin. For oily skin, you will use the gel form, and for the dry skin, you can use cream or lotion form. Perfect. Well, now that we know कि सनस्क्रीन एप्लीकेशन हमें कैसे करना चाहिए और किस प्रकार का सनस्क्रीन हमें किस टाइप की स्किन के लिए यूज करना चाहिए, ऑल्सो मिनिमम कितना SPF हमें यूज करना चाहिए सनस्क्रीन में, वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर, एनी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम ऑन अ डे टू डे बेसिस अपना सकते हैं ताकि हमारा एक्ने रिड्यूस हो? Exercise. Okay. This is a must. Exercise, diet control. And now wash your face at least 2 times daily, at morning and night time, and moisturize your skin. Doctor, if you're talking right, stress-free life, proper sleep, these are all the factors which will affect your acne. Well, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से डेफिनेटली आपके फेस में वो चीज दिखता है और एक्ने के क्षेत्र में भी वही चीज अप्लाई होता है। डॉक्टर, एक्ने के बारे में अगर हम पूछने जाए, किसी लोगों में हमने देखा है कि हेरिडिटरी है, वो जनरेशन वाइज फॉलो करते आ रहा है। क्या हेरिडिटी इज वन ऑफ द, आई थिंक वन ऑफ द रीजन व्हाई इट कैन अपीयर? समवेयर इट अफेक्ट्स। और क्या ये कंटेजियस है या किसी? No, acne is not a contagious thing. This is not a contagious thing. This is your problem only. Right. तो क्या हाइजीन एक रीजन हो सकता है इसका? हाइजीन yes. If because in acne we have a 2 type of lesion. It's a non-inflammatory and inflammatory. In inflammatory we have a pus. Pus means bacteria. Right. So their hygiene works. So if a patient has more acne, they need to change the pillow cover after every 3 or 4 days. Okay. So hygiene matters. Well, I think जितने भी हमारे डाउट्स है रिगार्डिंग एक्ने, आई थिंक हमने आज काफी सारे क्लियर किए हैं। और मैं अगर अभी जानना चाहूँ कि हमारे व्यूअर्स क्या कहते हैं, हमारे व्यूअर्स के पास भी कुछ सवाल हैं जो आपसे आज पूछना चाहते हैं। कृति कपूर पूछ रही हैं, हाउ ऑफन शुड आई schedule follow-up appointments to track my progress? To a dermatologist? Yes. Yeah, like I usually prescribe first time medicine for 4 weeks. If in a 4 weeks patient get results, then after every 2 months. Right. But you have to continue to see the results. It's not like कि आपने आज medicine start किया तो कल results आ जाए. So you have to be patient. Well, patience is the key to success. We have heard of it. और definitely patience बहुत मैटर करता है। कोई भी इस तरीके के ट्रीटमेंट में हो, आपको सब्र करना बहुत जरूरी है। We have another question coming up, doctor, from Faria Beg. Faria asks,
Is it possible that my acne is related to any underlying health issue? Underlying health issue. If you are taking medicine for some other disease, then acne can occur. Okay. Like if patient is taking medicines, like patient is taking steroid for some disease, some other medical condition. If patient is taking steroid for some medical condition, then acne can cause. If patient is taking some gym products, then acne can occur. Whey protein, then acne can occur. So all these conditions can cause acne. तो डॉक्टर हमें पता कैसे चले कि अब किस कारण से एक्ने हो रहा है? How can we know it? Ma'am, basically for this doctor is there. Right. Na? He will first ask the history, whether you are suffering from some other disease, are you taking some protein supplements, are you taking any steroids, your periods are normal or abnormal. All these questions first we ask, then we will prescribe the medicines. Right. Well, Faria Beg, I think you have got your answer. कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई issue हो रहा है, please follow up with your nearest dermatologist. With that, we have Purvi Mehra asking us, ma'am, should I avoid wearing makeup or certain skincare products while treating my acne? Yes, you have to avoid wearing makeup, because I have already said it's because of increased oil production. Acne are because of increased oil production, and if you will apply the makeup, then oil will not come out. It will stuck inside your skin and will convert into acne. So you have to avoid makeup whenever you have a acne. Right. Well, Purvi Mehra, I think you naturally look beautiful. Makeup or no makeup does not matter. अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए कोशिश करें कि हमेशा क्लीन स्किन आप रखें. We have another question coming up from Sunil Madan, who asks, hello ma'am, can we apply sunscreen on acne and how does it help? Yes, we have to do sunscreen every day, whether acne hai or nahi hai. You have to sunscreen use daily to avoid the side effects of UV radiation on your skin. But in acne skin, we have to use the gel. This is the only separate thing. Okay. But you have to use the sunscreen. Right. So Mr. This is like moisturizer and sunscreen. These two are the things which is like just daily toothbrush, daily brush. Okay, na? This is like that. You have to daily use the moisturizer and sunscreen. Right. बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे डॉक्टर ने आज हमें दिया है कि जैसे आप डेली सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वैसे ही अपने स्किन केयर रूटीन में ये दोनों चीज जरूर आप इंक्लूड करें एवरी डे. नाउ स्पीकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग योर स्किन, डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट. सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और चाहे आपको एक्ने हो ना हो, सनस्क्रीन प्रिवेंट्स एजिंग. सनस्क्रीन प्रिवेंट्स एजिंग. ओके. वेल, आज हमारे लाइफ में कुछ अनोखा हो रहा है. जितना देर हम टाइम आगे जा रहा है, हम कुछ ना कुछ नया जान रहे हैं आज इस लाइफ में, which is the reason why I do not want this life to end as of now. Doctor, before we leave today, which I really don't want, any closing remarks you have for our viewers? आप जाने से पहले कुछ हमारे viewers को कहना चाहते हैं regarding acne or its treatment? Regarding acne, basically, ma'am, you have to have a stress-free life, exercise regularly, sleep proper, and have a healthy diet. Like it should contain fruits, salads, less calories, less oily, less sugar, less dairy products. All these precautions you will take whenever you have a acne. And don't use other products, basically. Don't use other products. यार इससे तू अच्छा हो गया तो मैं भी अप्लाई. Right. Don't use other products. Right. And कोई भी समस्या हो, प्लीज हमारे डॉक्टर जो आज हमारे साथ बने हैं फिलहाल, वो भी यही बात कह रहे हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं कि खुद कोई कंक्लूजन में नहीं आके
please consult your nearest dermatologist or your nearest doctor. With that, I would like to thank you so much, Dr. Sarita, for your valuable time. It has been a very informative session for our viewers. It was great to hear from you, and we look forward to many more such sessions for our viewers in coming time. And thank you, viewers, for your participation for today's session, and stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Bye. Keep glowing. Thank you.